Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all and warm welcome to English with Teacher Malik. Today we are going to start one of the important topic in English, that is the pattern of organization. What is meant by pattern? Pattern is the overall organization or how you develop your paragraph in any speech, in any paragraph, in any essay writing. When you are going to develop a thesis, when you are saying something, you are following the pattern. So the term pattern of organization means the writing style, okay, the pattern, the system of sound which are organized and grouped into different sentences to make a paragraph. Pattern of organization show the relationship between supporting details in paragraph, essays and chapters. जब भी हम लिखने के अमल से गुजरते हैं तो हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, हम एक स्टाइल यूज़ करते हैं राइटिंग में। किसी भी पैराग्राफ, किसी भी ऐसे को लिखने के लिए तो वो जो पैटर्न होता है वो हमें बताता है कि हमने कौन से वर्ड्स को सिलेक्ट करना है, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस कैसे कंबाइन होगा, क्या पैटर्न बनेगा, क्या उनका जो है चेन ऑफ वर्ड्स होगी। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सपोर्टिंग डिटेल्स, और फिर हम उसमें डिटेल्स डालते हैं, हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ एन ऑथर थिंक्स, वो आपके ऑथर का थिंकिंग प्रोसेस आपको देता है, एंड हेल्प यू रिमेंबर व्हाट यू रीड। ओके, सो टेक्स्ट स्ट्रक्चर, टेक्स्ट किसी भी तहरीर का जो स्ट्रक्चर होता है इज हाउ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, वो आपको ये बताता है। इट टेल्स यू अबाउट how the information is organized, how they are going to develop the thesis and giving the supporting details. Text structures और patterns, यहाँ पे patterns के लिए हम कौन सा वर्ड चूज कर रहे हैं, text structures। और text structures और pattern of organization not only vary from writing to writing, obviously आप स्पीच लिख रहे हैं, आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, उसके लिए आपका राइटिंग पैटर्न चेंज होगा, बट टेक्स्ट स्ट्रक्चर में ऑल्सो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, चेंज फ्रिक्वेंटली फ्रॉम पैराग्राफ टू पैराग्राफ, ओके, फ्रॉम राइटिंग टू राइटिंग, एक लिखाई से दूसरी लिखाई में जब आप जाते हैं तब भी, और फ्रॉम विद इन अ सिंगल पीस ऑफ राइटिंग में वो फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स के जब भी हम कोई लिखते हैं राइटिंग ऐसे, या तो हमारा जो ऐसे होता है, जो हमारा राइटिंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट पैराग्राफ्स पे कंपोज्ड होता है, ठीक है। सो व्हाट इज पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन आई एम टेलिंग यू हाउ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ यू आइडेंटिफाई इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। जैसे आपको आगे कैटेगरीज हम पढ़ने जा रहेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी से हमें पता चलता है। हमें ऑथर के पर्सपेक्टिव का पता चलता है बाय डिस्कवरिंग द वे द मैसेज इज बीइंग सेंट। हर लिखारी जो होता है, जो लिखने वाला होता है, राइटर होता है, उसका अपना स्टाइल होता है, और जिस तरह वो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स करता है उसी तरह वो पैटर्न बनाता है, उसका एक स्टाइल होता है। Every writer has a purpose for writing and some plan of actions for getting a message. जब भी कोई राइटर लिखता है, as I discussed it earlier, कि जब भी कोई लिखने वाला लिखता है तो उसका एक पर्पस होता है, उसका एक राइटिंग पैटर्न होता है, वो अपने टेक्स्ट को स्ट्रक्चर करता है। This plan of action is in the order in which the material will be presented in the text, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं बेसिक एक पैराग्राफ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहले टॉपिक सेंटेंस होता है, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस होता है, और फिर एक क्लिंचर होता है जो कि तमाम डिटेल्स को टुगेदर करता है। टॉपिक सेंटेंस यूजुअली लोकेटेड एट द बिगिनिंग, एज द नेम इंडिकेट कि ये टॉपिक सेंटेंस है तो ये टॉपिक के बारे में बताएगा। इट
It helps reader to know what to expect in the next paragraph. Then supporting sentence, to make it clear and detailed, ये elaborative होता है और ऊपर कहीं भी topic sentence के बारे में supporting sentence देता है. Next है clincher sentence. It pulls all the details together and signals that the end of the paragraph has to come. Clincher जो होता है वो concluding sentences होते हैं. सबसे पहली कैटेगरी जब हम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं हमारे पास आती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमेशा किससे रिलेट करता है? नरेशन से, टाइम ऑर्डर से एंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट से. ठीक है. डिटेल्स सपोर्ट द मेन आइडिया एज अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स टोल्ड इन द ऑर्डर दैट दे हैपेंड. ठीक है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो नंबर या सीक्वेंस को डिटेल करता है, टाइम ऑर्डर के बारे में बताता है. और इसके क्लू वर्ड्स कौन कौन से हैं? इसके क्लू वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं after, afterward, as soon as, at last, at that time, before, during, eventually, finally, first, second, following. अब आप देख रहे हैं इस सीरीज में ये सारे पैराग्राफ जो है ये आपको क्या शो कर रहे हैं? इमीडिएटली किसी टाइम का बता रहे हैं. एट दैट टाइम, एट लास्ट, एज सून एज, they all refer to the time order. Later, next, now, meanwhile, उसी लम्हे, shortly, since, then, until, when. ठीक है. since is again there. और इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. The example of chronological order is: This morning was crazy. My alarm clock was set for PM instead of AM, so I woke up really late. I just threw on some clothes and ran out the door. Then I rode my bike as fast as I could and thought that I was going to be late for sure. So यहाँ पे इन few lines में आपको एक sequence बताई जा रही है. Sequence of event है. This morning was crazy. My alarm clock was set for PM. Then in the third and the fourth step, he woke up and ran out the door. Then I rode my bike as fast as I. Okay, तो यहाँ पे वो sequence बता रहा है. वो यहाँ आपको graphically दिखाया गया है कि woke up late, got ready, rode bike to school and saw people. तो ये 1, 2, 3 and 4 इवेंट्स हैं जो वन आफ्टर दी अदर हुए हैं. इनमें से कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं है जो पहले आ सके. तो यहाँ पे बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको शो कर रही हैं कि आप क्या हो सकते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहे हैं. सेकंड कैटेगरी हमारे पास पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है कंपेयर एंड कंट्रास्ट की. ऐसे पैराग्राफ्स जिसमें पैटर्न में कंपेयर किया जाता है इज अ टेक्स्ट स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ टू और मोर थिंग्स आर एक्सप्लोर्ड. दो से ज्यादा चीज़ों का मुवाजना किया जाता है उनकी सिमिलैरिटी पे या डिफरेंसेस पे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट विद द कंपेयर एंड कंट्रास्ट टेक्स्ट स्ट्रक्चर, the text structure should be discussing similarities and differences. The text must be both considered compare and contrast and the clue words, और इसके लिए clue words होंगे similar, जहाँ कहीं भी similar, different, on the other hand, but, however, in the same way, like, unlike, etc. So ये हमारी जो सेकंड कैटेगरी है कंपेयर एंड कंट्रास्ट के लिए उसमें हमारे पास ये क्लू वर्ड्स आएंगे. एग्जाम्पल ऑफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट: एप्पल एंड ऑरेंजेस आर बोथ फ्रूट्स व्हिच मीन्स दैट दे हैव सीड्स इनसाइड of them. Each has a skin, but orange has skin thick and easy to peel. Apple skins are thinner and do not peel easily. Oranges also contain more acid than apples, but both fruits are delicious. तो यहाँ पे compare and contrast हो रहा है, alike and differences. Okay. Third category for pattern of organization is
cause and effect. कोई cause होगी which will cause an other effect, that is cause an other event. This pattern is used to show the different causes and effects of various conditions. Paragraph structured as cause and effect explain reasons why something happened or the effects of something. The clue words are for this reason, consequently, because, on that account, as a result, therefore, however. Example of cause and effect. Many people think that they can get sick by going into cold weather improperly dressed. However, illness are not caused by temperature, they are caused by germs. So यहाँ पे वो कह रहे हैं cause and effect क्या है about the temperature and about being temperature. So while shivering outside, so cause क्या थी? People are exposed to germs, that's why they are getting sick. और people don't dress properly for the weather. So हमारे पास यहाँ पे दो causes बताई गई हैं और वो कह रहे हैं कि मेन कॉज जो है सर्दी नहीं है बल्कि क्या है, जर्म्स हैं जो बीमारी की वजह बनते हैं. अच्छा जी, नंबर 4, द स्पेशल. व्हाट वी कॉल इट स्पेशल. Spatial organization is when information in a passage is organized in order of space or location. A spatial pattern of organization arranges information according to how things fit together in physical space. यहाँ पे स्पेशल से आपने मुराद लेना है, आपने मतलब लेना है स्पेस. स्पेस मीन फिजिकल एनवायरनमेंट अराउंड अस. स्पेस का यहाँ मतलब खला नहीं है बल्कि स्पेस का मतलब है physical space, the physical environment around us, how the things are arranged in a passage or in a paragraph according to the spatial patterns. Okay, if we were to describe the room in which we were sitting right now, we would be using spatial organization. The clue words are next to. Yes, the clue words are next to, behind, across, from, below, that, above that, the right of. So this is all about the spatial. We are talking about the physical environment around us. Example of spatial. Volcanoes are a feared and destructive force for good reason. A volcano is like a pressure valve for the inner earth, but they can also be very beautiful. This is one of the beautiful example for spatial. क्या है यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक वॉल्केनो है जब वो erupट करता है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स कॉज करता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है. अर्थ बेड रॉक है एंड इट इज ट्रिमेंडियसली हॉट रनिंग फ्रॉम. तो डिफरेंट फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बताते हुए यहाँ पे वो बता रहा है कि मैग्मा है, कंडल्ट है, बैक है. तो यहाँ पे वॉल्केनोज आर ब्यूटीफुल येट दे आर डिस्ट्रक्टिव. तो यहाँ पे आपको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे और क्लू वर्ड्स भी आपको नजर आ रहे होंगे. नंबर 5th one is the sequence order or process writing as it is called when information in a passage is organized by the order in which it occurs. Sequential, जिस सीक्वेंस से जिस तरतीब से इवेंट होगा आप उसी तरह एक्सप्लेन करते हैं. सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज्ड विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हमने वेरी फर्स्ट पढ़ा था जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन टाइम ऑर्डर, वो सीक्वेंस ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा कंफ्यूज होता है. लेकिन टेक्स्ट ऑर्गेनाइज क्रोनोलॉजिकली अकर एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड सेटिंग. So here is the minor difference. Text organized chronologically occur at a specific time and setting, whereas text describing processes or sequences do not occur at any specific time and place. The clue words are first, next, before, lastly, then, etc. Okay, and the example of sequences, these are the way of how to make a cookies. First get your materials, then make your dough, lastly cook your dough at 400 degrees for 10 minutes.
So what is the sequence? Get material, make a dough, and then cook the dough. So this is the example of sequence. And the clue words first, next, before, and lastly will explore the pattern. This is the end of my topic, and happy learning. Allah Hafiz.